हाँ, इसको पढ़ लें, ये आपका चौथे चैप्टर का सिलेबस है, इसको जरा गो थ्रू करें। IT system topic. IT system. IT system are preface क्या? सर कैसे पढ़ते इस वर्ड को? परवेसिव परवेसिव परवेसिव। Pervasive. Pervasive. Pervasive in organization, they are used for stock control, booking, asset management, and logistics. These systems operate effectively because they are designed and planned and understanding of convis convi con convis con, con सर सर कैसे पढ़ें? एक सेकेंड, कहाँ पे? कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ये वाला। Conventional हाँ, कन्वेंशनल negotiation. नोटेशन। Conventional in notation. Conventional negotiation will be enable students to design system consistently of both hardware and software component. ठीक है, अब आप ये देख लें, व्हाट स्टूडेंट नीड टू लर्न। यहाँ से पढ़े, ये शुरू में किया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेसर पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आईटी सिस्टम। ये शुरू करें यहाँ से। An IT system is collection of hardware and software process and the people that work together to achieve a specific business object or goal. ठीक है, ओके आगे। B. Software refers to the program and application of operation system that runs on a hardware. Example software includes the process of web browsing and database. ठीक है, तो Database management system process. ये समझ में आया आपको? आईटी सिस्टम समझ में आया ये वाला? कह रहा है जो आईटी सिस्टम होता है इज अ कलेक्शन ऑफ। हाँ हाँ, हाँ, ये बेसिकली कह रहा है एनआईटी सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड पीपल दैट वर्क टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव और goal। ये इसकी डेफिनेशन है। और ये हार्डवेयर की डेफिनेशन है, हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट सच एज डेस्कटॉप लैपटॉप सर्वर एंड नेटवर्किंग डिवाइस लाइक राउटर एंड स्विचेस। ये सब क्या है? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर पढ़ लिया आपने? चलिए आगे हाँ पढ़ सर ले। सॉफ्टवेयर पढ़ लिया. आगे पढ़ ले। Process are the process workflows and protocols that are followed by the people and software in system. Process system achieved by specific object process can be automatic through the software, but they can often carry out people who are interested in this system. ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है कन्वर्जन।
जिसके अंदर हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए प्रोसेस में आना जरूरी है ना। जैसे लिखा प्रोसेस आर द प्रोसीजर्स, workflows and protocols that are followed by the people and software in the system to achieve specific objectives. Process can be automated through software, but they're often carried out by people who interact with the system. अब people देख लें। पीपल पढ़ ले, पीपल पढ़ लिया आपने? हाँ सर, पीपल भी पढ़ लिया। पीपल पीपल ये पढ़ लिया आपने? Oh, people is an essential component of IT system. They are designed, develop, implement. They are designed, developed, implement implement implement, हाँ and implement maintained, and maintain। and maintain the system, and they use it to carry out the business tasks. People included IT professionals such as programmers and analysts, system and administrators, as well as the end user who interact with the system to perform their job efficiently. Communication and collaboration amongst people are critical to succeed in IT system. तो ये बेसिकली इन्होंने चार कंपोनेंट के बारे में बताया है, जो यानी जो कि कलेक्शन है, यानी आईटी को डिफाइन किया है कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर। ये हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोसेसेस ये प्रोसेस हो गया, और पीपल, यानी ये चार कम जो पार्ट्स हैं ये मिल के एक आईटी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। अब है अंडरस्टैंड हाउ टू डीकम्पोज अ सिस्टम इनटू स्मॉलर सब सिस्टम एंड कंपोनेंट। डीकम्पोज करने का मतलब होता है कि हम लार्ज प्रॉब्लम को या लार्ज सिस्टम को स्मॉलर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको हम कहते हैं डीकम्पोज करना। हाउ टू डीकम्पोज सिस्टम इनटू स्मॉलर सब सिस्टम एंड कंपोनेंट, यानी प्रॉब्लम को, कोई भी लार्ज प्रॉब्लम या लार्ज प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करना इनटू स्मॉलर प्रोग्राम। यहाँ से पढ़े। Decomposing a system into smaller subsystems and components is a common practice in software designing and system design. This process helps to break down a complex system into manageable parts, making it easy to understand and analyze and maintain. Here are some steps to follow when decomposing a system. Identifying the system boundaries. Determine what is inside and outside of the system. This helps to define the scope of the system and its inter- interface with other systems. Identifying the main functions and requirement. Identifying the key functions and requirement of the system. This helps to ensure the decomposition is aligned with all areas goals of the system. Analyzing system analyzing the system architectures Analyzing the system architecture to identify the major component and the design relationship. This can be done by reviewing the system design diagram and flow charts and other document. हाँ, तो इसने यहाँ बताया हुआ है कि हम डीकम्पोजिशन कैसे करते हैं।
डीकम्पोजिशन जैसे मैंने आपको बताया ना, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि लार्ज सिस्टम को स्मॉलर सिस्टम में कन्वर्ट करना। इतना उस वक्त तक स्मॉलर करना जब तक कि वो अनब्रेकेबल हो जाए। तो decomposing a system into smaller subsystem and component is a common practice in software engineering and system design. So this process helps to break down a complex system into more manageable parts, making it easier to understand, analyze and maintain. ठीक है। और ये इन्होंने इसके स्टेप दिए, here are some steps to follow when decomposing a system. Identify the system boundaries. ठीक है। सिस्टम की बाउंड्रीज क्या है, डिटरमिन व्हाट इज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। दिस हेल्प टू डिफाइन द स्कोप ऑफ सिस्टम एंड इट्स इंटरफेस विद अदर सिस्टम। कि क्या ये सिस्टम अदर सिस्टम के साथ काम कर सकता है या नहीं कर सकता, ये देखना होगा। आइडेंटिफाई मेंटेन, आइडेंटिफाई द मेन फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द की फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन कितने फंक्शन है, सब आइडेंटिफाई करते हैं। So this help to ensure that decomposition is aligned with the overall goal of the system. ठीक है। फिर एनालाइज द सिस्टम आर्किटेक्चर। फिर आप स्टडी करें उस सिस्टम को जिसको आप कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं एनालाइज द सिस्टम आर्किटेक्चर टू आइडेंटिफाई द मेजर कंपोनेंट एंड देयर रिलेशनशिप। So this can be done by reviewing system diagram, flow chart and other documentation. क्या आप कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, इसी लार्ज सिस्टम को आप ब्रेकअप करते जा रहे हैं स्मॉलर सिस्टम के अंदर। इतना ब्रेकअप करते हैं, इतना स्मॉलर कर दें कि वो अनब्रेकेबल हो जाए। और जितना ये ब्रेकअप होता जाएगा प्रॉब्लम, उतना उसको सॉल्व करना इजी होगा। ठीक है। हम्म। अब ये देखें, फर्दर आइडेंटिफाई सब सिस्टम। Identifying subsystem that can be separated from the main system. This can be based on the functional, logistics, or physical criteria. Analyzing each subsystem, identifying its main component and relationship. This can be done using similar techniques as used for the main system. Repeating the process, continuing decomposition process until the composition component are at the manageable level of complexity, where varieties and uh, valid dates, varieties and validates the composition by ensuring that it is meets to the system's requirement and that its components can be implemented, tested, and in a integrated success. Overall, decomposing a system into a small subsystem and components is a complex that required carefully analyzing and planning. It is important to ensure that the results components are well defined, uh, cohesive, and have clear interface to fluctuate, success, implement, and maintenance. ओके। तो बेसिकली ये क्या है, आइडेंटिफाई सब सिस्टम। ठीक है, यानी एक सिस्टम के फर्दर कितने सब सिस्टम बन सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर लें। तो आइडेंटिफाई सिस्टम दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन सिस्टम। ठीक है। और दिस कैन बी बेस्ड ऑन फंक्शनल, लॉजिकल और फिजिकल क्राइटेरिया। ये फंक्शनली कितने कंपोनेंट बन सकते हैं, लॉजिकल कितने बन सकते हैं और फिजिकल बेसिस पे कितने बन सकते हैं। तो ये कंपोनेंट को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। फिर कह रहा है एनालाइज सब सिस्टम। अब सब सिस्टम को जाके स्टडी करें। एनालाइज ईच सब सिस्टम टू आइडेंटिफाई इट्स मेन कंपोनेंट एंड रिलेशनशिप। So this can be done using similar technique as used for the main system. ठीक है, जिस तरह मेन सिस्टम को स्टडी किया इसी तरह सब सिस्टम को स्टडी करें। ओके। अब लिखा हुआ है रिपीट द प्रोसेस, कंटिन्यू द डीकम्पोजिशन प्रोसेस until the component are at manageable level of complexity. बेसिकली अभी कह रहे हैं कि आप इसको रिपीट करते हैं उस वक्त तक। ठीक है, जब तक कि ये एक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को
solve knowledge. Verify and validate the decomposition by ensuring that it meets the system requirement and that the component can be implemented, tested and integrated successfully. तो बेसिकली इसमें यही है, क्या वेरीफाई करें, उसको वैलिडेट करें कि सिस्टम वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. Hmm. अब है बी एबल टू डिजाइन आईटी सिस्टम फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड सब सिस्टम टू मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट. सिस्टम आर गिवन इन अपेंडिक्स 7. सिंबल्स आर गिवन. अब ये पढ़े. Design Developing the system architecture. The next step in is to develop the system architecture, which involves designing the overall structure of the system, including how different subsystems will interact with each other. ओके आगे. ओके आगे पढ़ ले. कहाँ तक पढ़ लिया आपने? सर पूरा पढ़ लिया था. पूरा पढ़ लिया. हाँ सर. ओके. ये बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक आईटी सिस्टम कैसे डिजाइन हो सकता है, उसके ये स्टेप्स हैं. सबसे पहले डिटरमिन करने रिक्वायरमेंट. ओके. पहले तो कह रहा है डिटरमिन द रिक्वायरमेंट. दिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द आईटी सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स पर्पस, फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी. ठीक है. Identify the component based on the requirement. You need to identify the component that will be required for the IoT system. Like क्या हार्डवेयर क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या चाहिए. These may include hardware, software, networking devices, and other equipment. सब identify कर ले. Design subsystem. Once you have identified the component, you can start designing the subsystem. यानी जो आपने सबसिस्टम पहले बना दिए, अब आप उसको डिजाइन कर लें. पहले आपने आइडेंटिफाई किए, आप डिजाइन करेंगे. So this involves breaking down the system into smaller, more manageable components that can be developed and tested individually. फिर कह रहे हैं डेवलप द सिस्टम डिजाइन. पहले आइडेंटिफाई किया, फिर डिजाइन किया, अब कह रहे डेवलप करें सिस्टम आर्किटेक्चर. द नेक्स्ट स्टेप इज टू डेवलप द सिस्टम आर्किटेक्चर which involve designing the overall structure of system, including how the different subsystem will interact with each other. ठीक है. अब ये देख लें. अब इसको पढ़ लें. Developing the individual component. With the architecture in the place, you can start developing individual component of the system, including software module, hardware devices, and network components. Test and violate date. Once the component and developed, you need to test the validate them to ensure that they meet the specific requirement. Integrate and deploy. Finally, you can investigate an individually component into system to deploy the system, the IT system in living environment. Throughout the design process, it is important to keep end user mind and ensure that the system is user friendly and meet their ends. It's also important to consider the factor that security, stability, and maintainability when designing an IT system. हाँ देखो, ये इसका मतलब होता है वैलिडेट. ये पढ़ते हैं इसको वैलिडेट यानी कंफर्म करना इट इज राइट और रॉन्ग.
और ये होता है डिप्लॉय, ये होता है इंटीग्रेट, ठीक है, और कौन सा था, ये डेवलप, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डेवलप द इंडिविजुअल कंपोनेंट, सबसे पहले कह रहा है नंबर 5, with the architecture in place you can start developing the individual component of the system including software modules, hardware devices and networking component, ठीक है। फिर कह रहा है टेस्ट एंड वैलिडेट, once the component are developed you need to test and validate them to ensure that they meet the specification। यानी अगर आपने सॉफ्टवेयर बना लिया है, आपने मैंने आइडेंटिफाई किया यूजर रिक्वायरमेंट, उसकी बेस पर डिज़ाइन किया आपने, फिर डेवलप किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके लिए आप उसको टेस्ट करें कि सॉफ्टवेयर एज पर रिक्वायरमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इंटीग्रेट का मतलब होता है कि जितने मॉड्यूल बनाए हैं, जितने सब सिस्टम बनाए हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है। फाइनली यू कैन इंटीग्रेट द इंडिविजुअल कंपोनेंट इनटू द सिस्टम एंड डिप्लॉय द आईटी सिस्टम इन लाइव, ये लाइव है, लिव नहीं लाइव होता है, यानी जहां पे चलाना है वहां पे इंस्टॉल कर दें, ये है इसका मतलब, ठीक है। मतलब नहीं समझ आया। इसका यहाँ से मतलब, इंस्टॉल करेगा वहां लाइव होगा मतलब। नहीं लाइव का मतलब देखो, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है ना, जिनके लिए बनाया है वहां जाके इंस्टॉल कर दें, जिस कंपनी के लिए बनाया है उस कंपनी में जाके इंस्टॉल कर दें, ताकि लाइव वर्किंग को जाके चेक करना है हमें कि वो लाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी सिस्टम आपने बनाया है, जिस कंपनी के लिए बनाया है वहां जाके इंस्टॉल कर दें और लाइव चेक करें कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हम्म। अब यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस फॉर पर्पस व्हेन एवेल्युएटिंग सिस्टम, यानी अब आप उसकी सिस्टम की फिटनेस चेक करें कि वो जिस पर्पज के लिए डिजाइन किया है उसके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पढ़े। The concept of fitness for purpose refers to the extent to which the system product meets the requirement and क्या, तो उसको कैसे पढ़ते हैं? Expectations, huh? Expectation of its use to intend to use. In other words, it's measured the abilities of a system to perform in intended function efficiently, reliably, and safely. To evaluate the system fitness, the purpose, it is very important to consider its design, construction, and operation character, as well as the specific needs of its user. This requires to compromise understanding of the system uh, intended purpose as well as requirement and consistent of environment in which it will be used. Some factors that may be considered when evaluating system fitness for the purpose include performance. How well does the system perform? It is indeed functional. Does it meet the necessary specification and regulation? हाँ, ये कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस फॉर पर्पस, यानी पूरे कॉन्सेप्ट है, रेफर टू द एक्सटेंट टू विच सिस्टम और प्रोडक्ट मीट द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स इंटेंडेड यूज। यानी हमने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या कोई सिस्टम डेवलप करवाया है, क्या वो पर्पस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हमने टेस्ट करना होता है। अगर नहीं कर रहा तो उसके अंदर अब चेंजेस लेकर आएंगे। इन अदर वर्ड इट मेजर द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म इट्स intended function effectively, efficiently, reliably and safely।
ये कह रहा है evaluate a system fitness पर it is important to consider it design के डिजाइन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है या नहीं, कंस्ट्रक्शन and operational critics as well as specific need of its use. This require a comprehensive understanding of the system intended purpose as well as the requirement and constraint of the environment in which it will be used. ठीक है, तो ये उन्होंने दिया. अब कैसे चेक कर सकते हैं? सब फैक्टर दैट मे बी कंसीडर्ड व्हेन एवेल्युएटिंग अ सिस्टम फिटनेस और पर्पस. यानी अगर आपने एवेल्युएट करना है कि जो सिस्टम हमने बनवाया है वो अकॉर्डिंग टू पर्पस है या नहीं, उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया दिया है. सबसे पहले दिया हुआ है परफॉर्मेंस. सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करें. हाउ वेल डज द सिस्टम परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन. डज इट मीट द नेसेसरी स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन. इसकी ये क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं. ये पहला फैक्टर परफॉर्मेंस है. और परफॉर्मेंस क्या चेक कर सकते हैं? उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से. ठीक है, आप ये पढ़ लें. Reliability. How dependent is the system and can it operate consistently and and reliability over time. Safety. How safe is the system for us intended to use? Does it pose any risk to the user's environment stabilities? How easy is the system to use? Does it require expensive training or specialized knowledge? Efficiency. How efficient is the system? Does it consume access or resources or requirement to significant maintenance? Overall, evaluating a system fitness for the purpose requirement throughout the understanding of the system intended to use, as well as the needs and expectation of its users. This evaluation process can ensure that the system meets necessary requirement and provides desired level of performance, reliability, and safety stability. ये होते हैं रिलायबिलिटी. इसको कहते हैं रिलायबिलिटी. हाउ डिपेंडेबल इन द सिस्टम इज द सिस्टम. कैन इट ऑपरेट कंसिस्टेंटली एंड रिलायबली ओवर टाइम. ठीक है, तो यानी कि वो कंटिन्यूटी के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 24 आवर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना होता है. हाउ सेफ इज द सिस्टम फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. डज इट पोज एनी रिस्क टू यूजर और द एनवायरनमेंट, ये चेक करना होगा आपको. यूजेबिलिटी कितनी है, हाउ इजी इज द सिस्टम टू यूज. यूजर जो है जिन्होंने इसको ऑपरेट करना है उनके लिए कितना इजी है. ठीक है, डज इट रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज. क्या यूजर को ट्रेनिंग करने की जरूरत है, ट्रेन करने की जरूरत है, ये भी इंपॉर्टेंट है. एफिशिएंसी. हाउ एफिशिएंट इज द सिस्टम. डज इट कंज्यूम एक्सेसिव रिसोर्सेज और रिक्वायर सिग्निफिकेंट मेंटेनेंस. ये सारी रिक्वायरमेंट की हुई. इस तरह यानी आप सिस्टम को चेक कर सकते हैं उसकी फिटनेस को, कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है, Mm. अब ये है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड द नीड फॉर डेटा फ्लो डायग्राम. अच्छा, ये डेटा फ्लो डायग्राम बनती है जब हम ये बेसिकली जब सिस्टम डिजाइन करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना हो तो डिजाइन स्टेज पे हम डिफरेंट डायग्राम यूज करते हैं. जैसे सूडो कोड होता है, फ्लो चार्ट होता है, एल्गोरिथम होता है, या डेटा फ्लो डायग्राम्स होता है, स्ट्रक्चर चार्ट. ये सारी कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स हैं जो से हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ डिजाइन. ये पढ़े डेटा फ्लो डायग्राम. Data understanding the concept and the needs for data flow diagram. Data flow diagram DFDS are virtual representation of how data flows through time. They are used to model the flow of the data and how its process variation
components in a system. DFD typically consists of several levels of diagram, each referring to different level of detail. The purpose of the data flow diagram is to help this diagram is to system identifying potential bot bottlenecks or interferes and improving the overall design of the system. DFDS particularly used for complex system where it is difficult to understand. हाँ, बेसिकली ये है डेटा फ्लो डायग्राम आर अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ डेटा फ्लो थ्रू अ सिस्टम। यानी ये जो एनालिस्ट होता है या डिजाइनर होता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जिस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं उसकी वर्किंग को डेटा फ्लो डायग्राम में राइट डाउन कर लेता है। कमेंट ये होता है कि पिक्टोरियल फॉर्म में आपको एक डेटा आ जाता है कि एक सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तो इससे आपको की जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है। इसी से प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करने में भी हेल्प होती है। तो दे आर यूज टू मॉडल द फ्लो ऑफ डेटा एंड हाउ इट इज प्रोसेस बाय वेरियस कंपोनेंट इन अ सिस्टम। आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। डीएफडी यानी डेटा फ्लो डायग्राम। A DFD typically consists of several level of diagram, each representing a different level of detail. बहुत सारी डायग्राम यूज होती हैं और हर एक की अपनी अपनी डिटेल होती है, वर्किंग होती है। फिर कह रहे हैं द पर्पज ऑफ डेटा इज टू हेल्प एनालिस्ट एंड डिजाइनर। ये दो लोग होते हैं, एक एनालिस्ट होता है जो सिस्टम की स्टडी करता है, प्लस डिजाइनर। ये एक शख्स भी हो सकता है, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ डेटा इन अ सिस्टम। इन सिस्टम काम कैसे करें उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल बॉटलनेक or efficiencies and improve the overall design of the system. AFD are particularly useful for complex systems where it is difficult to understand the flow of data just by looking at the system component. Basically, data flow diagram क्या होती है ये मैं आपको शो करता हूँ अभी। ये देखें, नजर आ रही है आपको डेटा फ्लो डायग्राम। यानी एक सिस्टम को हम कन्वर्ट कर देते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, तो हमें उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है ना। यानी वो जिस प्रोग्राम को हम डेवलप करने जा रहे हैं, जिस सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं, उसको पहले सबसे पहला स्टेप है उसको स्टडी करना, एनालाइज करना। फिर दूसरा स्टेप है उसको डिजाइन करना। फिर तीसरा स्टेप है उसको डेवलप करना। फिर चौथा स्टेप है उसको डिप्लॉय करना। फिर पांचवा स्टेप है टेस्ट करना। फिर छठा स्टेप है मेंटेनेंस, रिक्वायरमेंट को दोबारा एनालाइज करना। ये सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट डेटा फ्लो डायग्राम को नजर आ रही है उनके से ये है, ठीक है। और ये है, आ रही नजर आ रही है, समझ आ रही है आपको? ये आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही? हेलो, आपको आवाज आ रही? हेलो हेलो। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही।
तो मैं आपसे पूछ रहा था, ये अच्छा। आपको नजर आ रही है डेटा फ्लो डायग्राम? हाँ सर। हाँ, ये डेटा फ्लो डायग्राम होती है, ये हमें इससे सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में इजीनेस मिलती है, ठीक है। फिर इससे हम अपना वो सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये वाला तो पढ़ लिया ना आपने, अब आप ये देख लें, ये पढ़ ले। There are several benefits of using DF, नहीं, DFDS. Clear communication. DF provides clear communication and consistency way of communication. The flow of data system, they can easily understand both technical and non-technical stakeholders. System System analyzing DFs provides a system way of analyzing a system, allowing analyzing to identify potential problems and identification in the system. Better design. By understanding the flow of the data, system design can be better discussed that the improve the efficiency and effectiveness of the system. Documentation. DFDS can use as a form of the recommendation, providing a clear record of the system design. ठीक है, तो ये बेसिकली बेनिफिट दिए हुए डेटा डीएफडी के, क्लियर कम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है, ठीक है। Mm. और सिस्टमेटिक एनालिसिस हो जाती है, ठीक है। ठीक है, बेटर डिजाइन और डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, इसको देख लें। Flow of data diagram are an important tool for the system analyzing and designing. They help to improve the design and efficiency of complex systems while also proving a clear and consistent way of communicating the system design to stakeholders. हाँ, ये बेसिकली समरी दी हुई है कि डेटा डेटा फ्लो डायग्राम से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ओवरऑल क्या। हाँ, ये देखो यहाँ पे मैंने लगाई हुई डेटा फ्लो डायग्राम, यहाँ पे क्लियर नजर आ रही हो। ओपन अकाउंट, चेक ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट कैश, विड्रॉ कैश, ये बैंकिंग सिस्टम है इसका पूरा बना हुआ है, ठीक। ओके, इसको गो थ्रू करें।
इसको कर लें। जी अच्छा, be able to interrupt and create data flow diagram to give to a scenario. Symbols are given. अपेंडिक्स 7। ये अपेंडिक्स 7 क्या है? ये अलग से एक फाइल दी है उसके अंदर जो सिलेबस था उसके अंदर। To interpret and create data flow diagram (DFDS) for giving scenarios. Following these steps, identifying the component is the scenario that are individually in process. The data identify the data flow, determine how data flows between the component in the scenario, determine the levels of details, decides on the level of details required for the DFD. This may involve creating multiple levels of diagram, each representing a different level of details. Creating the DFD, the user symbol to create DFD with the arrow intended the flow of the between the components validation of DFD, ensuring that the DFD is accurately representing the flow of the data in the scenario. ये असल में स्टेप दिए हुए हैं कि इंटरप्रेट एंड क्रिएट डेटा फ्लो डायग्राम किस तरह से कर सकते हैं फॉर गिवन सिनेरियो। सबसे पहले कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट इन द सिनेरियो दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग द डेटा। कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे जो सिर्फ प्रोसेसिंग से रिलेटेड है उसको आइडेंटिफाई कर लें। आइडेंटिफाई द डेटा फ्लोज, डिटरमिन हाउ डेटा फ्लोज बिटवीन द कंपोनेंट इन द सिनेरियो, यानी मूवमेंट चेक कर लें एक डेटा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। डिटरमिन द लेवल ऑफ डिटेल, decide on the level of detail required for the DFD. Further जितनी भी डिटेल्स है तो मैनेज करें। इसमें इन्वॉल्व क्रिएटिंग मल्टीपल लेवल्स और डायग्राम, यानी एक लेवल 1 फिर लेवल 2 फिर लेवल 3 लेवल 4 इस तरह डिफरेंट लेवल जनरेट होंगे, ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल। लेवल के अंदर डिफरेंट लेवल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वही समझेंगे मॉडल बेस। क्रिएट द पीएफडी स्टैंडर्ड सिंबल, अभी आपको पीछे दिखाया था ना डायग्राम के अंदर ये डिफरेंट सिंबल यूज हो रहे हैं, ठीक है। क्रिएट द डीएफडी, यूज स्टैंडर्ड सिंबल टू क्रिएट द डीएफडी with arrow indicating the flow of data between the component. Validate the DFD, ensure that the DFD accurately represents the flow of data in the scenario. ये सब हाँ ये पढ़ लें फिर एक्सपेंड करते हैं। Here are example scenarios and how to create DFD. For each scenario, a customer places an order on a website. The order is processed by a company order fulfillment system, which then sends the order to the warehouse for shipment. Identify the component involved in the scenario of the customer's website and the order fulfillment system and the warehouse. Identifying the data flow. The data flows includes the order information, which flows from the customers to the website. Then from the website to the order fulfillment system, the order is then sent from the order fulfillment system to the warehouse for shipment. ये पूरी रिक्वायरमेंट लेके चल रही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल एग्जांपल सिनेरियो एंड हाउ क्रिएटिवली a customer places an order on a website. Order is processed by the company's order fulfillment system. We then send the order to the warehouse for shipment. तो ये पूरा सिनेरियो, इसके लिए उन्होंने बताया कि आप इसको कैसे टीएफडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कंपोनेंट इन्वॉल्व इन द सिनेरियो और द कस्टमर है, द वेबसाइट है, द ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम है एंड द वेयरहाउस। ये चार कंपोनेंट आ गए। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द डेटा फ्लोस, डेटा फ्लो फिर इसकी मूवमेंट डेटा कहाँ से इन हो रहा है कहाँ से आउट हो रहा है। डेटा फ्लो इंक्लूड द ऑर्डर इंफॉर्मेशन,
कहाँ से ऑर्डर प्लेस होगा, विच फ्लोज फ्रॉम कस्टमर टू द वेबसाइट। ठीक है, कस्टमर वेबसाइट की तरफ ऑर्डर जाएगा, एंड देन फ्रॉम द वेबसाइट टू द ऑर्डर फुलफिलिंग सिस्टम, वेबसाइट से डेटा चला जाएगा उन लोगों के पास जो इसको यूज करेंगे। ऑर्डर इज देन सेंट फ्रॉम द ऑर्डर फुलफिलिंग सिस्टम टू द वेयर हाउस फॉर शिपमेंट। जिन्होंने प्रोड्यूस करना था प्रोड्यूस करके उन्होंने यानी सेल डिपार्टमेंट के लिए, सेल डिपार्टमेंट ने उसको वेयर हाउस पे पहुंचा दिया। ठीक है। ओके। आपकी जो वो मिसिंग क्लास है ना, वो मैं दूंगा आपको 16 अक्टूबर के बाद। 16 अक्टूबर के बाद। इसी मंथ में हो जाएगी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह जो भी। ठीक है सर। हाँ, वो हो जाएगी। बस सर आप 5 दिन पहले मुझे बता दें, क्योंकि सर मैं 23, 24, 25 एंड 27 को बिजी हूँ। ठीक है। सो ये 5 दिन मैं नहीं ले सकती हूँ रात को क्लासेस। ठीक है। उससे पहले आप जितना मुझे बोल दें मैं ले सकती हूँ। ठीक है, यानी आप 4 डेज बिजी हैं, वो मैं मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं उससे पहले कर दूंगा। ठीक है, मैनेज। ठीक है। बस 16। 23 से 27 में मैं नहीं अवेलेबल हूँ। ठीक है। उसके बाद या उससे पहले मैं हूँ। ठीक है सर, वो मैनेज कर लेंगे जो आपकी मिसिंग होंगे। 23 को तो आपकी कोई मिस नहीं होगी। 24 आपकी मिस होगी। कब होती है आपकी? नहीं, 23 को वेडनेसडे है ना। चले, यस सर। ये मैनेज हो जाएगी। 24, 25, ट्वेंटी हाँ। सिक्स और 27। हाँ, तो एक ही क्लास मिस होगी आपकी, 23 वाली। हाँ, वो मैनेज कर लेंगे। हाँ सर, लेकिन मैं वेनेसडे को मैं क्लास नहीं ले सकती हाँ, हूँ वो तो 23 आ रहा है वेडनेसडे सर। में। हाँ। हाँ, तो वो बाद में मैनेज कर लेंगे, 27 के बाद मैनेज हो जाएगी, वो हो जाएगी। एक मिनट, एक मिनट सर। वेनेसडे 23 हो रहा है ना? हम्म, हेलो सर। जी, 23 हो रहा है। हाँ, 23 को वेनेसडे अगर है तो फिर उस दिन में क्लास लेगी। ठीक है, फिर आप 24, 25, 26, 27 बिजी है ना। 28 से फिर हाँ, ये अवेलेबल है। 24, 25, 26, 27 ये 4 दिन मैं नहीं ले पाएगी। ठीक उसके है। बाद मैं ले सकती हूँ। ठीक है, हो जाएगा। जो भी मिसिंग इंशाल्लाह। होगी आप मैनेज करें। ठीक। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज सर।